Okay, we are live. Hello, guys. Welcome to another episode of the In Behind podcast. And today we have a second guest, Ankit Bhai from Almighty Blues FC. और चेल्सी की बात करने वाले हैं जैसे कि थंबनेल में है. एंड वी विल कीप इट इंग्लिश. बिल्कुल मतलब कैंडिड चैट रहेगा. सो अगर कुछ होगा आपको पूछना होगा अंकित भाई से तो कमेंट करना. और शुरू करते हैं हम लोग हमारा गेस्ट एपिसोड. पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और बहुत बढ़िया लग रहा है आपको एज अ नहीं गेस्ट. नहीं इट्स डेफिनेटली माय प्लेजर. मतलब अगेन जैसे मैं ऑफ स्टेज भी बोल रहा था, लाइक हम सब ऐसे ही शुरू करते हैं एंड आई रिमेंबर लाइक गोइंग लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम. बेसिकली आपके पास जो एक फेवरेट टीम है, सो दैट्स रियली पॉजिटिव एनर्जी जो देखने को मिलता है. एंड आई हैव सीन योर अर्लियर पॉडकास्ट आल्सो, सो आई रियली लाइक्ड इट. और एट द एंड ऑफ द डे यार फुटबॉल डिस्कस करना है तो रियली अप फॉर इट. या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. या मैं शुरू करता हूँ. पहला सवाल मुझे ये कि आपका इस समर का जो सबसे बड़ा ट्रांसफर था लुकाकू. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिम? डेफिनेटली मुझे पता है मोस्ट ऑफ द चेल्सी फैंस आर पिस्ड ऑफ, पर व्हाट आर योर थॉट्स? हाउ यू सी हिम आफ्टर दिस इंटरनेशनल ब्रेक? और कितना वायबल है? क्या आर यू व्हाट डू यू थिंक टुचेल क्या सोचता रहेगा आपके हिसाब से? देखो मतलब लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आर फ्लोइंग है लास्ट एक महीने में. मतलब एकदम उल्टा पुल्टा बहुत सारा हो गया है चेल्सी में. लाइक जो भी बोले कम है इन टर्म्स ऑफ लुकाकू. वो सेंटर स्टेज रहा है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोवर्सी, इन टर्म्स ऑफ नॉन गोल स्कोरिंग, इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग. लेकिन मेरे ख्याल से ना इट्स अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया. हम जो रहते हैं ना अभी, आप थोड़ा भी कुछ बोलो तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है और समझा जाता है. और लुकाकू स्पेशली लाइक नोइंग लुकाकू, वो ऐसे एकदम मतलब ही इज नॉट अ फूल. उसको पता है वो क्या बोल रहा था, व्हाट हैपेंड मीडिया में जाकर बोला. यस डेफिनेटली वो गलती थी. एट द एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो लाइक एक यंग मैन है, तो ही मेड अ मिस्टेक और वो एडमिट किया है. या वो बोल सकते हैं आप वो मीन नहीं किया हुआ है ना बेसिकली, जो भी सॉरी वीडियो के साथ आया था. बट ही हैज टू स्कोर एंड प्रूव एवरीवन रॉन्ग कि बेसिकली ही इज हियर टू स्टे. लेकिन अभी वापस से एक ब्रेक हो रहा है और अभी वापस से रिपोर्ट शुरू हो गए कि देयर इज अनरेस्ट इन द कैंप. आवर फॉरवर्ड्स आर नॉट हैप्पी कि टुकल जैसे ट्रीट कर रहे हैं. वो अभी का नहीं है. टुकल बेसिकली डॉर्टमंड के दिनों से पता है कि टुकल इज रियली एग्रेसिव इन ट्रेनिंग. लाइक आप कंपेयर करते हो बेसिकली चेल्सी के बहुत लेजेंडरी मैच हो चुके हैं लाइक कॉन्टे, जोसे मोरिनियो, जो ऑन द पिच डेफिनेटली वो चिल्ला देते थे, बीट एट द सपोर्ट स्टाफ, बीट एट द प्लेयर्स. लेकिन टुकल एक ऐसा इंसान है जो ऑफ द पिच जो है ट्रेनिंग में बहुत ही स्ट्रिक्ट है. दैट इज नोन और दैट इज नॉट न्यू. आपको पता है जब आप चेल्सी में आ रहे थे, दैट इज समथिंग दैट द वर्ल्ड नोज कि दैट इज व्हाट यू विल गेट. तो लुकाकू एंड लाइक एंटायर फॉरवर्ड लाइन को बोलूंगा मैं कि यू हैव टू बी रेडी. इट इज चेल्सी फुटबॉल क्लब. आप बेसिकली यूरोपियन चैंपियंस में आ रहे हो. यू हैव टू बेसिकली चेंज योरसेल्फ आल्सो. आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि the club will change as per you, and this manager has got us laurels. तो मैं तो अगर ऐसे बोलेगी कि यार टुकल वर्सेस लुकाकू है तो आई वुड बी ऑन टुकल साइड एनी डे. लेकिन वैसे है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस हुआ है थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से. और देखो ऑन द पिच आल्सो ऐसा नहीं कि वो एक फ्लॉप है और समथिंग लाइक दैट. लुकाकू स्टार्टेड रियली वेल सीजन का शुरू में. ही डिड रियली वेल एंड देन he had injury setback and of course that controversy. So under all that cloud, आप जो भी हो, the best of the best players don't perform under that pressure. So आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. It is just half a season, boss. Like half a season बहुत ही जल्दी है for anyone to come to conclusions. So I would not say it's anywhere close to a flop. लेकिन हाँ, बहुत ही negativity जा रही है मीडिया में in Chelsea, which is something that as a senior player like Lukaku, he has to understand. और hopefully ये break के बाद he'll perform on the pitch जो सबके बोलती बंद कर दे. आई थिंक टॉटनम के अगेंस्ट हमने जो मैच देखा उसके पहले वाले मैच में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जहां तक देखा कि लुकाकू को मतलब कंसिडर नहीं किया जा रहा था काफी ऐसे गेम में. पासेस नहीं मिल रहे थे, वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट वगैरह हो रहा था. बट मुझे ये भी लगता है कि आपने बिल्कुल बोला कि ही इज नॉट अ फ्लॉप येट. जिस तरह का उसको मीडिया बैकलैश मिला है उतना कि हैरी केन को नहीं मिला उसके फॉर्म की वजह से, बिकॉज ही इज इंग्लिश मीडिया का वो प्रेफरेंस होता है. तो कहीं ना कहीं एज इन मुझे लगता है कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है कि प्लेयर चेल्सी को कितना मीडिया, हाउ डज मीडिया सी चेल्सी एंड हाउ डज इट अफेक्ट देयर गेम? डू यू थिंक चेल्सी का मतलब गेम मीडिया की वजह से भी उतना इम्पैक्ट करता है? I think Priyansh can relate to me very well. Yeah,
क्योंकि प्रियांश तू भी इट्स अ बताओ। चेल्सी थिंग। हाँ, प्रियांश में भी आप पहले बोलिए, आपको क्या लगता है? हम्म। देखो, पहले मीडिया के बारे में तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट सीजन अगर किसी को याद होगा, टीमो वर्नर वाज स्कोरिंग, काई हैवर्ट्स हैट्रिक मारा था, कप लीग कप में, एफए कप था कुछ था। तो स्टार्ट सबने अच्छा किया था, पर धीरे 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 जैसे टीमो वर्नर एंड काई हैवर्ट्स बोथ सेड इन द इंटरव्यू दैट प्रीमियर लीग इज टफ, दे आर अडैप्टिंग फ्रॉम बुंडेसलीगा, इज अ बिट फास्ट, इंटेंसिटी, फिजिकल। थियागो सिल्वा ने भी सेम बोला था। तो वो लोगों को टाइम लगा अडेप्ट करने के लिए, पर उसके बाद टीमो वर्नर हमको पता चांसेस बहुत मिस करने लगा। और जेन्युइनली उसने अपनी इंटरव्यू में बोला कि अगर मैं गोल करता तो लैम्पार्ड सैक नहीं होता। तो वो देख के एक चीज अच्छा लगा कि हाँ, मतलब कोई तो मैनेजर के लिए खेलना चाहिए था। और यही इंग्लिश मीडिया पे वापस आना चाहूंगा कि इस सीजन हमने देखा है कि जैक ग्रिलिश, जेडन सैंचो, हैरी केन, किसी का भी फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। मैं किसी को भी डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, हैरी केन मेरा पर्सनल फेवरेट स्ट्राइकर है, बट जहाँ पे क्रिटिसिज्म है वहाँ तो देना ही पड़ेगा। तो वही है कि लास्ट सीजन अगर किसी को याद होगा कि टीमो वर्नर, काई हैवर्ट्स इनके पीछे ही पड़ गए थे सब लोग कि ये ऐसे ये वैसे। काई हैवर्ट्स चेल्सी का मोस्ट रिकॉर्ड्स का साइनिंग, मैं भी था उसमें। मैं चैंपियंस लीग फाइनल के बाद अलग बात है, मैं इंस्टाग्राम पे उसके जाके सॉरी सॉरी लिखा था। तो वही मतलब कि तो उससे प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो और जो जैसे मीडिया का यहाँ पे देखा होगा आपने कि अगर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टियानो का नाम लिख दे तो बहुत व्यूज मिलते हैं, क्लिक्स मिलते हैं। तो वही जैसे कि इंग्लिश मीडिया का कहा कि कोई बाहर के जो प्लेयर्स रहते हैं, जैसे ये लोग जर्मन प्लेयर्स हैं, तो इनको बहुत ज्यादा बैकलैश देंगे, और यही सब होता रहता है। तो वही प्लेयर्स को इफेक्ट तो बहुत करता है ये चीज। मैं एक चीज ऐड करूंगा इसमें, सर्टनली मतलब बहुत अच्छा पॉइंट मिला बोला प्रियांश ने, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना, मतलब हम जानते हैं कि दीज आर ऑल मल्टी मिलियनर प्लेयर जो है आज के दिन में, लेकिन अगेन वो यंग मेन है, लाइक सब 26 27 25 कुछ लोग है ना एट दैट एज। आई नो उनके पास एक मैनेजमेंट ग्रुप है टू काइंड ऑफ मैनेज एवरीथिंग, लेकिन दे आर स्टिल लर्निंग द ट्रेड ऑफ लाइफ। वो एक चीज है, स्पेशली जो लोग आते हैं बाहर से। हाँ, बोल सकते हैं लुकाकू डेफिनेटली बहुत खेले इंग्लैंड में, लेकिन आई थिंक जियेश हो गया या वर्नर हो गया या बेसिकली हावर्ट्स हो गया, लोग दीज आर young men who are basically coming आपको फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में। so it's not easy for anyone कि स्पेशली पैंडेमिक सिचुएशन में जब आए। और टीमो वर्नर की बात करें तो he's actually from the time he signed, he has the most goals and assist contributions in Chelsea Football Club. So I don't think again you can say that is a flop. Yes, वो underperform किया है in terms of expectations. Certainly मैं बोलूंगा his finishing is nowhere close, his touch is nowhere close. लेकिन I think media डेफिनेटली दे नीड सम कंटेंट। हमको भी चाहिए लेकिन मीडिया को बेसिकली दे नीड मसाला, जो बोलते हैं मसाला चाहिए उन्हें उन्हें। और चेल्सी एक ऐसी क्लब है ना, इट्स अ चेल्सी थिंग, कि जब भी मीडिया बैकलैश होगी ना, चेल्सी एक्चुअली विल परफॉर्म, एंड दैट इज हैपेंड। तो इन अ स्ट्रेंज वे, मतलब इट्स हैपनिंग बैक इन द डे, लाइक नॉट इवन जोसे मोरिन्यो, मैं तो बोलूंगा इवन बिफोर रनियरी, लाइक बिफोर रनियरी अर्ली 2000s में भी ये होता था कि people said we ain't got no history, back to back we won cups and we came into league, and then we got Jose Mourinho, उस समय आर्सेन वेंगर थे, सर एलेक्स फर्गुसन थे। मीडिया वाज टोटली अगेंस्ट जोसे मोरिन्यो, एक ब्रैश एग्रेसिव मैन कम्स इनटू द पिक्चर। और डेफिनेटली हम देखें कि चेल्सी स्टार्टेड परफॉर्मिंग। सो it's really a Chelsea thing. At the end of the day, I would say कि it's in a way strange way it's good कि media is against Chelsea, and not just Chelsea, a lot of other clubs, let's be fair. लेकिन Chelsea का कुछ ज्यादा ही मतलब हमने देखा है because of the fact that we are champions of Europe, तो एक expectations भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही एक अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपको कि इतने 23 गेम हो चुके हैं, राइट? सो इतने 23 गेम होंगे, व्हाट इज दैट वन गेम आपको लगता है कि यार दिस इज हाउ आई वांट माय टीम टू प्ले, दिस इज द परफॉर्मेंस आई नीड फ्रॉम एवरी मैच, दिस इज द परफॉर्मेंस आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? ऐसा कौन सा मैच लगा आपको कि यार चेल्सी, यार ये दिस इज इट मैन, आई वांट दिस फ्रॉम यू एवरी टाइम यू प्ले? Yeah, I'll definitely come to that. Like, I'll ask Abhishek, like, maybe as a neutral,
मतलब एज ए न्यूट्रल क्या लगता है आपको कि बेसिकली व्हिच वाज योर बेस्ट मैच जस्ट टू वॉच चेल्सी? I don't follow Chelsea matches much. Means the last I remember, I watched the Tottenham match, and I pretty much like that match. इसमें it means That's a great pick as well. currently Chelsea is at a crisis. Means they don't have any fullbacks now, proper fullbacks, and they still won against uh, uh, Antonio Conte's team. So I felt that game was a good game. It means the best game for them. That's a great answer. Like, actually, until Abhishek told that, I didn't actually remember that, although वो सबसे recent match था. I would actually pick that one. But along with, I think, if I would say ties against Liverpool. Yeah, I don't know, हाँ, Yeah. Spurs what a game. स्पर्स के साथ जो मैच है ना, इन टर्म्स ऑफ राइवलरी, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल जो है, एक अलग ही मतलब लड़ाई वाला माहौल होता है वर्सेस स्पर्स, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड टोटली. लेकिन लिवरपूल एक कॉम्पिटिटिव एज जो बोलते हैं ना, और वो चीज है जो लिवरपूल स्पेशली लीग में फॉर सम स्ट्रेंज रीजन हम रिसेंट ईयर में हम उनसे जीते ही नहीं है. मतलब वेरी स्ट्रेंज है. आई नो लिवरपूल काफी अच्छी टीम है अभी फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, बट कप्स में हमने एक्चुअली एक बार तगड़ी हार दी थी उन्हें. In the league, for some reason, we are not able to beat them. And both the matches, I think we should have beaten them. Like जो performance थी ना, first game में obviously वो red card changed the course of the game. Reece James को red card मिला था, और second half totally different था. First half के performance में alone Chelsea easily, were the better team, I would say, considering जो situation थी match की. और obviously the recent game उसमें Liverpool were 2-0 up and Chelsea to come back. वो एक चेल्सी स्पिरिट दिखी ना, वो स्पिरिट. सो आई वुड एक्चुअली इफ यू हैव टू आस्क मी, एक पर्टिकुलर हाफ पिक करूंगा. और सबसे रिसेंट वाला जो लिवरपूल गेम था, सेकंड हाफ ना, इट वाज नॉट इवन सेकंड हाफ, लास्ट आवर आई वुड से, फ्रॉम 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स, दैट वाज लाइक ऑसम. दैट कमबैक, नेवर से डाई एटीट्यूड, कोवाचिच का गोल, और वो एज एन एक स्ट्रेट फेस के साथ खेल रही थी ना चेल्सी, वो अलग ही लेवल थी. बहुत बढ़िया गेम हुआ वो. आई रिमेम्बर लाइक 2 गोल खाली है. थिंग इज मैं प्रीमियर लीग में आई हैव ऑलवेज बीन, मैं चूज करता हूँ ये सीजन इसको, ये सीजन उसको मैं सपोर्ट करूंगा. ये सीजन आई वाज लाइक दिस सीजन आई एम प्लेइंग फॉर चेल्सी, आई एम ऑलवेज बी रूटिंग फॉर चेल्सी, एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड. और जो कोवाचिच ने गोल किया, और मुझे तो अच्छा लग गया, हमारा एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर कहीं भी परफॉर्म करता है मैं खुश हो जाता हूँ. सो It's good you say that, because people forget ना, the guy is multiple European champion, उसको मिलती नहीं credit इतनी, उसको मतलब really he's probably one of the most position underrated players in itself world football. in the position itself in that midfield is very मतलब underappreciated, and he scores a goal. अगला question I think प्रियांश would like, sorry Abhishek would like. प्रियांश थोड़ा बाद में, थोड़ा चेल्सी का एंड में हम लोग रखेंगे. अभिषेक go तो with your अभी question. चेल्सी का भी फुल बैक का ये क्राइसिस हो रहा है. तो सो व्हाट आर योर थॉट्स कि मतलब कौन से फुल बैक मींस व्हिच फुल बैक दे शुड साइन लाइक फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए अभी? That's a $1 million question, हाँ. मतलब like मेरे लिए तो like I was really disappointed, सच बोलूं तो, when we didn't sign Luca Digne. ऐसा बंदा था जो इंग्लिश प्रीमियर लीग को जानता है, अटैकिंग फुल बैक है, विंग बैक में प्रॉपर. बेन चिलवेल जो था लेस्टर सिटी में, उस टाइप का प्लेयर है इन अ वे, आप बोल सकते हो. तो वो अच्छे से मोल्ड हो सकता था, बट आई रियली फील दैट Tuchel is doing something that he knows what he's doing. Like, he obviously knows what he's doing, lekin he's actually doing it for a purpose, for the long term. He's not here for the short term, unlike recent Chelsea managers. We all know that Tuchel is a different kettle of fish. Yeah. So he knows that Ben Chilwell is going to be back hopefully by the summer, or maybe just beyond the summer. And Alonso, as much as we slate, even the Chelsea fans, even neutrals, बहुत लोग है ना उसको बोलते हैं Alonso यार defensively यार he's slower than a snail. लेकिन trust me, like what he gives to the team, you can't take it away. क्योंकि again, like I think Drew asked, like when backs are against the wall, हम perform करते, that is Alonso for you again. So I will still count on him, and I think if really if you ask me whom I wanted, then apart from Luca Digne, I think the options were not really available in the market. People are saying go for Serginho Dest, go for Kieran Trippier, who we missed as well. Lekin
these are right-footed left wing backs at best. Who wasn't really going to be starting games anyway. That's not how we play. But that's what I'm now scared of, because the latest reports say Reece James is fit or nearing fitness, and strangely, when he got injured that match, he was actually playing left wing back. So, in a very strange way, I think that Tuchel might, deploy Reece James there, which I don't want to see. So that is the only reason why I don't mind even seeing Kennedy there. As much as I know that he's not a left wing back, he's really a winger, naturally speaking. But I'll go with Tuchel, because I think he really knows. He wanted Emerson, or he wanted someone who knows the club. He didn't want to basically, as in unsettle the players again, who already unsettled, right? So signing a new player wouldn't make much sense. But now that we are hearing a lot of transfer rumors from other clubs happening, again, competition speaks for itself. Yeah. I won't be surprised if we go in late in the transfer window. But who's available as in left wing backs? I think Theo Hernandez also is extending, मेरे ख्याल से, if Yeah, I'm not yeah, wrong. he's extending. Yeah. Yeah. So I don't think anyone is really available of that quality, So we might as well work with what we have. So Christian Pulisic has been playing as a left wing back for some time, I've observed. Yeah, right wing back And actually. yeah. So, and now recently he said that he's struggling in Chelsea. So what can he do now? Yeah, again, I don't know if you read the exact quotes, but like I just want to slightly correct that. Matlab, no, there's a huge difference. The way I'm sure Priyansh must have taken a closer look as well at that statement. Like Lukaku going and saying something about the system was totally different than what Christian Pulisic stated. Yeah. वो एक example है कि how one should go and speak in the media. Like that could be a case study in itself. Christian Pulisic put it in a fantastic way. Yes, he put it like, yes, I've been playing in different positions nowadays, and that is not something that I am used to, but maybe it'll help me, right? So that because he's going to becoming, more, he's more adjusting. He's more basically, someone that who could play multiple positions, can give more to the team. I know a lot of US fans. I myself used to live in Canada, a few years ago, and I know that the fan following is like crazy for Christian Pulisic in North America. Crazy is a small word. And I know that if he isn't playing at Chelsea, that is a bigger of an issue than him playing a right wing back, right? So for me, even the fact that he's featuring and he's able to contribute, as in being a youngster, he's still very young. We all forget that. I know he's Captain America and all that. Like, बहुत ही young है बंदा. Like, 23. yeah, like come on, that age, like I still remember what I was doing at 23. Come on, Yeah. like certainly, as in at that age, you are supposed to just take in. Like I know a lot of us fans, and of course the media especially, we put players in certain positions. Trust me, when we actually play football, and I'm sure like you all play football, like people who actually play football understand that, like you're not born for a certain position. You play football. Yes, maybe goalkeeper versus outfield player is totally different, but it's not like a striker cannot play as a defender. Yes, it's kind of strange looking at Christian Pulisic in the same game. He's moving from a striker to a winger to a right wing back. That is probably the strangest thing. Lekin that is what Tuchel brings, the tactician he is, and if Christian Pulisic is able to live up to that, and yes, he needs to improve on his game. I would still say that, because अगर Christian Pulisic वो attacking right wing back बनता है, like we all know, entire summer, I'm sure again Priyansh would remember that we went for Hakimi. Entire summer we were trying, but obviously that the fees was too much, so we didn't go for him finally. And of course he himself said no. लेकिन the reason why Tuchel wants that, and we saw in this season as well, आपको attacking wing backs चाहिए हमारे system में, right? Someone who could also come in field as well as attack on the wings, and that is exactly what Christian Pulisic brings. So yeah, again, Hudson-Odoi, Christian Pulisic, it's all in their minds. Christian Pulisic, I would still say कि वो बंदा better है in terms of mental strength. Hudson-Odoi still needs to build on that, क्योंकि he has a mind blockage. Like you have to play what the coach wants you to play, not what you want to play. Yes, you can have a preference, you can have basically a natural ability, लेकिन यार आप अभी भी बहुत ही young हो, आप you cannot call the shot. Let's be real. Yeah, बिल्कुल. And I think Pulisic has done pretty well. We have a viewer right now. Okay, please like the stream. Really appreciate it. Do comment.
if you have any question, and also leave a comment if you are watching this and if you like the stream. So any other questions? अभिषेक कुछ और पूछना तुझे? मेरा हो गया. No, मैं हो गया? Okay. Okay, I will have one question. फिर takeover, Chelsea takeover, complete takeover. Okay, उसके बाद I have one question. How good has Kepa been? How happy are you to see Kepa perform at a great level? वो मुझे जानना है आपके बारे में. इससे तो सुनता ये रहता ना हूँ मैं. अगर ये वीडियो बाद में बहुत लोग देखेंगे एंड आई एम होपिंग एवरीवन वॉचेस अगेन, जो भी देख रहा है और देखेगा, प्लीज लाइक द वीडियो, सर्टेनली हेल्प्स, और शेयर भी करिए. It doesn't take anything just to share on social media, because yes, we want basically the channel to grow, and again we are building a community. And the reason why I say that this particular video, if people see मैं जो बोलने वाला हूँ, people will think ये पागल है बंदा. Kepa, like again, lot of people जो चेल्सी को वीक इन वीक आउट नहीं देखते, वो लोग बोलेंगे यार आप जोक कर रहे हो का, केपा इज नोवेयर क्लोज टू मेंडी और व्हाटएवर. लेकिन ऑनेस्टली सच में बोलूं, जस्ट हैंड ऑन माय हार्ट, केपा हैज परफॉर्म्ड एज गुड एज मेंडी दिस सीजन, और मैं जोक नहीं कर रहा, एंड दैट्स अ रियलिटी. when or rather there's also debate he's done better than Mendy के फिर भी errors हुए इस season में. Kepa, I know he's played primarily only in the cup games, लेकिन जब भी he's called upon, I don't remember a single mistake in this season. Yes, last season FA Cup final you can say that, but again I don't think height is not his problem. It is what he has, like his reach is that. So for me, yes, as much as मैं खुद अपने चैनल पे बहुत केपा को क्रिटिसाइज किया हूँ लास्ट 12 महीनों में, मैं लिटरली बोल रहा था यार दिस इज द वर्स्ट ट्रांसफर एवर इन फुटबॉलिंग हिस्ट्री, लीव अपार्ट चेल्सी की हिस्ट्री. लेकिन आई वुड लाइक टू ईट माय ओन वर्ड्स, लाइक, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू टुकल. ये बंदा एक अलग ही लेवल है, मैन मैनेजर जो बोलते हैं ना, वी यूज्ड टू से अबाउट कार्लो एंचेलोटी. Carlo Ancelotti is one of the best man managers. I'm sure a Real Madrid fan, bro, you would know that for sure. Yeah. So क्या जादू किया उसने. Yeah, he is वो arm around the shoulder वाला बंदा है ना. That is what Carlo Ancelotti is. What has he done to Vinicius? Yeah, exactly. वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, तो उसको बोलते हैं. आप लैम्पार्ड को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि यार लैम्पार्ड के लिए एवरीथिंग वाज न्यू, सो फॉर हिम डूइंग सो मच वाज टू मच फॉर मी. लेकिन टुकल अंडरस्टूड एग्जैक्टली क्या मिसिंग है केपा में, वो कॉन्फिडेंस देना, एंड द मोमेंट ही हैज टेकन द ग्लव्स, I don't think he's looked back, and I think Kepa is probably one of the stories of the season. Again, मैं इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, पता चला नेक्स्ट मैच में ना 2 गोल कंसीड कर लिया by mistake, but yeah. नहीं, प्रियांश प्रियांश तो बोलता रहता है. केपा के बारे में एक आपसे सवाल है मेरा, पर मैंने ये सोचा था पहले. डू यू रिमेंबर द मैन सिटी गेम रिसेंटली वी लॉस्ट 1-0? Oh yeah. Obviously. That shot also, so, you can say the height, na? One thing I'm asking, no doubt that was a brilliant banger by De Bruyne. Kante missed that tackle. The moment that tackle was missed, I knew this was a goal. This can't be stopped. So if you see the goal in post-match, do you doubt Kepa's means he was in the middle. He moved to the right side, but De Bruyne had no chance to score on that side. So he moved that side, and De Bruyne went to the far corner, which we everybody know will go. So do you means in the match it happened very fast, so I couldn't say anything. But after I watched it slowly, do you doubt Kepa's positioning for the goal? मैं उसके लिए तो नहीं बोलूंगा. हाँ, मतलब उस पोजीशन में आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली फर्स्ट मूवमेंट जो था वो राइट साइड में था, एंड देन वो एक माइक्रो सेकंड जो होता है, एंड दैट्स व्हाई ही वाज लेट एंड कमिंग बैक, राइट. एंड वो रीजन है. इट वाज, आई थिंक, De Bruyne's smartness. He played around Thiago Silva, so Thiago Silva को he created a shield. So Kepa couldn't see that, to be very honest. Like, from Kepa's point of view, हम जो देखते हैं टीवी पे, obviously our angle is different. But if you actually imagine, De Bruyne actually used Thiago Silva as a shield, and he played the ball around Thiago Silva, and it was a world-class strike. Yes, आप बोल सकते हो कि he shouldn't have been इतना आगे in front of goal as well. Like, that is something that maybe he didn't expect that वो shot आएगा. लेकिन again, it's a great point, because I would not pinpoint on that particular instance. लेकिन मे बी फ्री किक सिचुएशंस में, तो फ्री किक सिचुएशन में स्पेशली फ्रॉम चेल्सीज राइट हैंड साइड एंड ऑपोजिशन लेफ्ट हैंड साइड से जब होते हैं ना, सो केपा लीव्स टू मच ऑफ अ गैप इन द नियर पोस्ट साइड, व्हिच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज टू मी.
क्योंकि he is giving his chance only to go right, but then there is a chance that एक दिन definitely goal होगा on the other side, far post, like it happened in real time. So that is one area that I would still see him to improve on. Hopefully goalkeeping coaches will work with him, but yeah, and then definitely वो एक major issue नहीं है. I will still go ahead and say that Kepa, yeah, when it comes to shot stopping, इस season में he's actually kept us in matches. I remember that was it Zenit game? I know it was a draw and all that. Trust me, he would have lost that game very badly. It was a terrible performance by Chelsea, and Kepa was world class in that game, despite I think conceding 3 goals, if I remember right. And recently the transfer saga going around it's really a TV show around Dembele, but do you see him coming in Chelsea in the next few 3 to 4 days? Means does it really make sense? Will Chelsea give him the salary? I know he will not ask for 40 million. Chelsea doesn't give for 40 million. You are not Lionel Messi. We can't give it. So do you think it can happen if Tuchel wants him? Yeah, मतलब I think again media would like to बोलते हैं ना jumping on the bandwagon. Because Tuchel has played with him 1 year and he had very excellent quotes about Dembele in the past, वो उनको मौका मिल जाता है ज़्यादा लिंक करने का. Of course वो एक मौका है उनके एजेंट को भी लिंक करने का. Knowing Chelsea or knowing Chelsea's salary wages structure, मुझे नहीं लगता कि ना इतना wages anywhere close होगा. अगर डेम्बेले आता भी है तो he'll have to basically agree that hey, I am not proven in the English Premier League, and I am basically at least more recently a flop at Barcelona. I know potentially is superb, लेकिन recently कुछ किया नहीं है of note. So that he is definitely taking a challenge. So he is going to be coming down. मतलब वो एक reason है. Maybe he will not lower down his wages for Barcelona because he's already there. So he's like, why should I lower it down now? And that is his debate. लेकिन maybe he will lower down at Chelsea. So I can see that happening, especially last 2-3 दिनों में, क्योंकि with Traore going to Barcelona now, I know you cannot say it's a like for like replacement, लेकिन I think Xavi, that is what he's aiming at, क्योंकि Traore didn't want to play as a wing back. पहले चेल्सी भी लिंक थी, फिर टॉटनम भी लिंक थी, बट चेल्सी और टॉटनम में वो विंग बैक जैसे खेलते, whereas in Barcelona he'll play as a winger. So there are very high chances कि Dembele is almost, I would say, बाहर ही, क्योंकि both off the field issues और on the field issues के कारण I think he's going to be out. And world football में not many teams are having that opening for a top, say a winger right now. But Chelsea are not finishing very well. वो Achilles heel रही है Chelsea की in the recent past, in last Lampard times, I think. वो एक finishing ability issue है. I know injury prone है Dembele and not great at finishing either, लेकिन I think slightly better than a couple of our attackers in terms of dribbling and finishing and playing big games. And yes, अगर Tuchel बात कर सके तो there is a high possibility वो आए. On a personal front, if you ask me, Priyansh, मैं अपने चैनल पे भी बहुत बोला हूँ इस बात में, और आई रियली फील स्ट्रांगली अबाउट इट. डेम्बेले, ऑल्दो एक वीडियो आया था, आई थिंक 2-3 सालों पहले आया था, वेयर ही एंड ग्रीजमैन वर मॉकिंग एट एशियंस at a hotel, and that is something that I strongly don't encourage at all. I know एक दो instance है, again going back to young people, these are all young people who mistakes करते हैं and all that, लेकिन I think there have been more than one occasion जो डेम्बेले पाए गए हैं with off the field issues. With already recent Lukaku saga and all that, हमें और इतना बैगेज नहीं चाहिए. तो पर्सनल फ्रंट पे मैं बोलूंगा नहीं, ही इज नॉट अ वर्ल्ड बीटर और ही इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ बैगेज. सैलरी भी इशू है, तो व्हाई टेक सच अ चांस इज व्हाट आई वुड से. ऑल्दो मेरी पर्सनल एफिनिटी है टुवर्ड्स लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स, लेकिन आई वुड स्टिल बैंक ऑन Ziyech आफ्टर द लास्ट गेम. वाओ, इफ यू कैन प्रोड्यूस दैट ब्यूटी कंसिस्टेंसी, दैट विल बी अ डिफरेंट लेवल. बहुत बढ़िया बोलता हूँ. एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं. नाउ हम एज वी टॉक, देयर वाज बारसा हैव बिड फॉर ओबामेंग ऑन लोन फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन. सो ये बारसा प्लेयर्स निकाल रहे हैं, मतलब डेम्बेले कहीं ना कहीं जा रहा है. तो आपका मतलब यू डोंट वांट हिम एट चेल्सी, क्या लगता है आपको अबाउट दैट? पीएसजी जाएगा मेरे को लगता है, अगर चेल्सी नहीं ले पाती. अगर चेल्सी का वही है ना, क्योंकि चेल्सी का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी अगर चेल्सी ले भी तो किसको हटाएंगे यार. इट्स जस्ट लिटरली 3 दिन बाकी है ट्रांसफर विंडो. या वेयर विल यू फिट हिम ऑन द बेंच? मतलब अटैकर्स की कमी नहीं है आपके पास. अरे तो लैम्पार्ड का क्या प्रॉब्लम था? लैम्पार्ड्स प्रॉब्लम वाज ही हैड टू मेनी प्लेयर्स ऑन बेंच एंड ही कुडंट कीप एवरीवन हैप्पी. तो इसलिए लॉट ऑफ डिस्कंटेंट स्टार्टेड हैपनिंग, स्पेशली विद सीनियर प्लेयर्स.
टुकल को Yeah. पता था वो प्रॉब्लम है, तो ही वुडंट वांट टू फॉल इन द सेम प्रॉब्लम. अभी लिटरली 3 दिन भी नहीं बाकी, लाइक 2.5 दिन बाकी है. 2.5 दिन में आप क्या तो ऑफलोड करोगे, लाइक और किसको ऑफलोड करोगे? जियेश अभी फाइनली फॉर्म में आए हैं. पुलिसिक हम बात कर लिए, ही इज वेरी समवन हु कैन प्ले राइट विंग बैक, स्ट्राइकर एज वेल एज विंगर. तो ही इज स्टिल इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस. Havertz is still very young. अभी मतलब come on, he brings a different element. और हमारे पास स्ट्राइकर्स है ही नहीं इतने, तो Havertz I would count him as a striker. Mount is Mr. Chelsea. तो मतलब आप निकाल ही नहीं सकते. वर्नर तो यार he's just coming back from injury and again he's one of those strikers. So 3 strikers तो चाहिए क्लब में, right? तो I know Armando Broja is someone that Chelsea से sell हो सकता है, unfortunately, as much as I would like him कि next season आए. लेकिन for me, Dembele, the only club which can afford him right now is probably PSG. मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप बोल सकते हो कि बारसा में बहुत पैसे आ गए, बट आई थिंक क्लियर है कि बारसा को बाहर चाहिए प्लेयर्स अभी, स्पेशली पीपल लाइक डेम्बेले. और पब्लिकली बोला यार, और क्या कर सकते हैं. तो आई वुड से कि PSG is the only other club that I'm realistically न्यूकासल. न्यूकासल. यार लेकिन that'll be totally wrong move, नहीं क्या मतलब? उतनी Newcastle relegation wants में वो लोग motivated को. people right now, नहीं? मेरे को पता the big problem I feel, see, I was a big Neymar hater, now I'm not. So I was thinking, can Neymar survive in Premier League? He rolls on the ground, if you touch him he will go down, and I can't be sure about Neymar that Neymar will survive in Premier League. So how can I say about Dembele? That's the case, because प्रीमियर लीग में भाई एक टैकल उसको भाई पकड़ पड़ गया ना, उसका रिकॉर्ड हमको पता ही है, कुछ भी हो सकता है. नहीं, वो है ही नहीं, मतलब वो टेम्परामेंट ही नहीं. टेम्परामेंट चाहिए अलग लेवल का. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देखिए न्यूकासल जैसे क्लब में, रेलेगेशन थ्रेटनिंग क्लब्स में, यू हैव टू फाइट एवरी मिनट. मतलब एक एग्जांपल दूंगा मैं. वाइनाल्डम जब खेलता था, आई नो टोटली डिफरेंट पोजीशन है. वाइनाल्डम जब न्यूकासल के लिए खेलता था ना, अलग ही लेवल था. मतलब वो ही बिकेम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर फ्रॉम देन, लाइक लोग जानने लगे उसको, राइट? तो despite basically he was coming from a different league and all that, Wijnaldum proved to the world that this is how you actually fight, be it in a relegation team. No matter आप कहीं के basically great player हो, he changed his game. So he became a DM almost. So that is what one has to do. आपको especially Newcastle जैसे club में, like पैसे होना एक चीज है, लेकिन Newcastle to really come up the level, they just don't need flair players. They need मतलब वो एकदम बेसिकली एकदम फाइट करने वाले बंदे चाहिए अभी. मेसी ने भी कितनी बार बोला डेम्बेले में पोटेंशियल है, करता नहीं है बंदा, पर कहाँ लेके जाएगा पोटेंशियल बंदा है तो. Even Tuchel has said ना in his interview that he is the best young talent. मतलब बुरा लगता है. नेमार भी हमको लगा कि भाई मेसी और रोनाल्डो के बाद यही है जो राज करेगा वर्ल्ड फुटबॉल यार पे. देखो, बट नेमार ही का सीन हैज ऐसा यार, अगर वो रहता ना बार्सिलोना में, मैं आज भी ये बात कहता हूँ, जीत सकता था वो एक बैलन d'Or. आई नो उस टीम में लियोनेल मेसी है, बट आई फील दैट एक बैलन d'Or जीत जाता वो. और 2015 में थर्ड भी आया था वो, ही वाज क्लोज, बट मेसी के आगे आप क्या कैसे जीत सकते हो. अब तो शायद से मेसी वो साल कोपा अमेरिका फाइनल में भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2 साल हारते हैं ना लगातार, 15-16 वाला पेनल्टीज पे. पूछ. और तेरे को वो करना है तेरा सेगमेंट जो तू पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो किया था वो देखना तो संडे ले. जवाब एक्सपेक्टेड ही होगा, अभी क्या बोल सकते हैं. तब भी पूछ पूछ लेता ले, हूँ, चलो. पूछना. हाँ. So, do you think PSG can win Champions League this season? Yes or no? सॉरी सिंपल यार, आंसर, कोई एक्सप्लेनेशन की देने की जरूरत नहीं. यस और नो चाहिए उसको. नॉट अ चांस. नॉट अ चांस मतलब हम लोग जीत रहे एक्चुअल हैं. करेंगे लोग. हम लोग नॉक करेंगे. Means I'm saying जीतना है. Do you think they can beat Real Madrid on 16th of February? हाँ. ऑन पेपर नहीं, लेकिन हाँ, फुटबॉल इज फनी. आई नो होता है, कुछ भी हो सकता है. लाइक व्हेन वी वन 2012 कौन सोच रहा था, लेकिन यार डिफिकल्ट है. रियल मैड्रिड एक अलग ही लेवल है, टू बी ऑनेस्ट. या वी है, अभी मतलब तो हमको विश्वास नहीं हो रहा. बेंजेमा सच बोल रहा हूँ. बेंजेमा अभी इंजर्ड है, तो देखते हैं वापस जल्दी आ First जाए. leg, Benzema कर guys, he's missing the first leg, I guess. Yeah, I Benzema. hope so. It's नेमार भाई 5 साल से एक ही फिक्चर मिस कर रहा है भाई, इस बार तो आ जाए कम से कम खेलने, एक मैच खेल ले बस. वही. नेक्स्ट क्वेश्चन चल. Do you think Ronaldo will leave end of the season Manchester United आई डोंट थिंक सो यार. मतलब if they don't qualify for Champions League?
next season. Okay, that makes a difference. Like first of all, I Because think they'll if qualify. Manchester United finishes in top 4, he will stay, no doubt about that. Hmm. We all know that. Yeah. See that's the thing ना, अब कहाँ जाएगा वो? Real Madrid वापस. That's PSG PSG बहुत एम्बाप्पे पैसे गोइंग टू मिलेंगे। रियल मेरे को तो वही लग रहा है, तो पूरा जो जनरेशन देखना चाहता है वो दिखेगा और ये लोग बैठ के मस्त कमाएंगे और क्या। That's और the वो thing. नासर अल खलीफा ही कर सकता है अगर ये करना है तो, भाई, और कोई नहीं कर नहीं सकता। I doubt it यार, I doubt it. मतलब for me और रोनाल्डो अंकित भाई आप एक और चीज देखिए, एम्बाप्पे जाएगा रियल मैड्रिड तो नंबर 7 भी खाली हो जाएगा वहां पे। Which Get my one? point. good one. ये मेरे नहीं, मतलब for मेरी some- ऑब्वियसली थियरी है, बहुत वाइल्ड थियरी है, बट माइट बी पॉसिबल। और पीएसजी है भाई, इसी के लिए तो बना है वो क्लब, और क्या बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, लेकिन यार फिर भी यार मैनचेस्टर यूनाइटेड रोनाल्डो का एक अलग इक्वेशन है। मतलब आप बोल नहीं सकते कि है ना, बिल्कुल है। देयर इज मोर टू इट। आप सर एलेक्स फर्गुसन के एक मीटिंग काफी होगा, टू बी वेरी हाँ, ऑनेस्ट। बुलाएगा, आओ कम टू द कॉन्फ्रेंस रूम माय बॉय। दैट्स इनफ, आई डाउट इट। या ओके। और व्हाट आर योर टॉप 4 फेवरेट्स फॉर दिस ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप कतर? ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन ना। मतलब अभी तो खैर मतलब क्वालिफिकेशंस आर काफी इंटरेस्टिंग स्टेज में। बोल दो पोर्टुगल इटली बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोल दो, नहीं, आपको क्या लगता है आपको? अच्छा मुझे तो उसके मतलब पहले ऑनेस्टली नीदर ऑफ देम आर माय फेवरेट्स ऐसे भी। लेकिन Who are जस्ट your इन टर्म्स favorites? ऑफ Favorites माय कौन है आपके? फेवरेट्स, पर्सनल फेवरेट्स, तो आई थिंक आई एम अ डच फैन, नेदरलैंड्स फुटबॉल टीम। हाँ, इट्स फार फ्रॉम इट, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि अगर सेमीज तक रीच करे, दैट्स ग्रेट अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सो आई वुड लाइक टू से देम, राइट। लेकिन हाँ, I would certainly not say England मेरे ख्याल से मिस आउट होगी इस बार। मुझे लग रहा है कतार में फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई थिंक द साउथ अमेरिकन टीम्स विल डू वेल। मुझे लग रहा है कि इस टाइम या ब्राजील और अर्जेंटीना, क्योंकि एक डॉगननेस जो बोलते हैं ना, वो है उन टीम्स में अभी, इन टर्म्स ऑफ जस्ट विनिंग। कल वाला मैच भी देखा था, लॉट ऑफ कार्ड्स इन बोथ द गेम्स। तो वो WWE ऐसा मैचेस। टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो वो बिग टूर्नामेंट्स में वो काम करता है। तो फॉर मी ब्राजील अर्जेंटीना डेफिनेटली रहेगी, और एक नेदरलैंड्स में बोला हूँ, और एक यार आप फ्रांस से दूर नहीं रह सकते हो, तो आई थिंक फ्रांस। You think the curse will do its magic this time? चैंपियंस का, फीफा वर्ल्ड चैंपियंस का कर्स। मतलब कर्स यार, आई वुड नॉट से कर्स है ना, मतलब इट्स लाइक कैसे बोलूंगा, लाइक इवन लाइक आई नो रियल मैड्रिड की है, ध्रुव इज द रॉन्ग पर्सन आई एम सेइंग दिस एग्जांपल टू। इवन इन चैंपियंस लीग, आप कहीं किसी के भी चैंपियंस हो, बी इट इन प्रीमियर लीग और बी इट इन चैंपियंस लीग, आप यू कैन नॉट रिपीट द फीट। मतलब क्यों? क्योंकि यू आर प्लेइंग द चैंपियंस। कोई भी टीम खेलेगी आपके विरुद्ध, तो पता है कि यू आर प्लेइंग विद द चैंपियंस, यू आर डबल मोटिवेटेड, यू वांट टू बीट द बेस्ट। तो that is why it's so difficult for you to repeat the feat. तो इसलिए मैं बोलूंगा कि it is what happens। लेकिन हाँ, फ्रांस का जो पूल ऑफ प्लेयर्स इज नॉट जस्ट द स्क्वाड, पूल है आई थिंक ऑलमोस्ट 35 प्लेयर्स है उनके। मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में टॉप लीग्स में आपके फ्रांस के प्लेयर्स मिलेंगे सब जगह। तो इट डिपेंड्स ऑन क्या मतलब फिट करते हैं 11 में। I totally couldn't relate with that one. कर सकते हैं रियल मैड्रिड तो यार बैक टू बैक जीते, मतलब जीते हैं भाई। लेट्स सी चेल्सी भी जीतेगी चैंपियंस लीग। या वही मैं, थैंक यू फॉर दैट। आपको क्या लगता है लिल के अगेंस्ट, मतलब कुछ चेल्सी फैंस है तो होप से, मतलब ये भाई बोल रहा था यार लिल के अगेंस्ट भी मेरे को डर लग रहा है अभी। आपको क्या लग रहा है लिल के नहीं अगेंस्ट? यार, मतलब वी शुड डू द जॉब। आई थिंक दे शुड गो थ्रू, या बट इट्स अ चेल्सी थिंग ना। मतलब आप जब एक्सपेक्ट करोगे हम एकदम नहीं करेंगे, तब हम एक्सपेक्ट करते परफॉर्म, और आप जब एक्सपेक्ट करोगे कि हम करते तब नहीं करते। मतलब दैट इज व्हाट हैपेंस। आप देख लो यार, सीजन जब शुरू हुआ था एवरीवन लाइक चेल्सी जीतेगी, एंड देन हम गिर गए लिटरली, बट चैंपियंस लीग में नो वन एक्सपेक्टेड वी वन इट, एंड इट्स नॉट जस्ट वन सीजन। प्रीवियस इयर्स में भी यही हुआ है। मतलब बी इट यूरोपा लीग, बी इट चैंपियंस लीग, जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते वही हो जाता है, राइट। तो लिल के साथ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लास्ट सीजन मैं तो इतना रिलेट करूंगा, आई नो इट्स लाइक चॉक एंड चीज, लेकिन पोर्टो जो थी लास्ट सीजन में, जब हमने मीट किया था पोर्टो को, आई थिंक क्वार्टर फाइनल स्टेज में था, दैट इज समथिंग हमने थोड़ा सा लाइटली ले लिया था। सेकंड लेग में वी टुक इट लाइक हमें मैनेज करना है गेम। और फिर वो टरेमी का वर्ल्ड क्लास जो वन ऑफ द गोल ऑफ द सीजन जब हुआ था,
For a few moments we were like having butterflies in our stomach ना. तो Yeah. मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं रहेगा. जॉनसन डेविड है लिल में, लिल का मिडफील्ड काफी अच्छा है. आई थिंक सैंचेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इफ एवरीवन इज फिट एक प्रॉपर मैच रहेगा. आई नो लिल लीग में कहीं भी नहीं है बट चैंपियंस लीग में अच्छा कर रही है. तो आई डोंट सी अस एज अ फेवरेट आउटराइट. हाँ, ऑन पेपर हमने डेफिनेटली जीतना चाहिए बट एंड हम जीतेंगे भी बट इट विल नॉट बी एज क्लोज एज व्हाट पीपल थिंक. ऑलराइट. कुछ पूछना है को प्रियांश? एनीबॉडी? हाँ वही मतलब एक मेरा सवाल था, मतलब आउट ऑफ द ब्लू है, इस पे तो मैं होप्स वैसे भी छोड़ चुका हूँ टाइटल रेस का. अगर आप चेल्सी का रन देखोगे 19 फरवरी से आपके पास है क्रिस्टल पैलेस है, फिर मार्च में आपके पास है बर्नली, न्यूकासल, नॉर्विच, साउथहैम्पटन, लीड्स. सो मुझे तो पता चांस नहीं है, बट डू यू थिंक कि मतलब इसको बोलते हैं कुछ फैन हो सकता है? प्रॉपर. आप अभी भी हो. थोड़ा सा होप थोड़ा. डेफिनेटली रहेगा. डेफिनेटली थोड़ा होप मतलब तो यार मैंने रहेगा. साउथहैम्पटन का परफॉर्मेंस देखा ना, मैं यार बोला कि यार ये टीम कर सकती तो यार मतलब ऑब्वियसली वो आर्सेनल ने भी बहुत बढ़िया खेला था. आर्सेनल शुड हैव वन दैट गेम, बट Exactly. नहीं. What I will clearly say, as much as Man City को बहुत respect देना चाहिए, hats off to Pep Guardiola. और ये रहा है against champions teams. Like again, this is a football thing ना. आप जो champion teams है, basically opponents are by default बहुत ज्यादा respectful उन्हें जो देते हैं ना. And that is a mistake that lot of opponents do. You don't need to give so much respect to Man City as teams do, including Chelsea. Chelsea, especially under Tuchel, में एक चीज से काफी नाखुश हूँ. In the big games, Tuchel has not been so effective in the Premier League compared to other leagues, and in the cups, etc. So for me, when I say effective, जो होता है ना outright win, like Mourinho was a master tactician when it came to big games. उसको पता था. हाँ, लेकिन उसका ढंग एकदम ही अलग था. आज के फुटबॉल में that will not do. ये डायनासोर फुटबॉल वाला era, that's a fact. So Tuchel also is giving a far too much respect to the bigger teams. और प्रियांश puts a great point क्योंकि हाँ, we have a great run. हम अगर जीते और अगर हम I know ifs and buts है, लेकिन लिवरपूल का गेम हमें पता था 4 महीनों पहले से कि हमने खेलने वाला है. जनवरी 2 को खेले थे, 15 को मैन सिटी को खेले थे. These fixtures are known. तो आपको पता कि AFCON होगा, ये होगा. तो हमें definitely better prepared होना था with a better approach to begin the games. So if we had taken points from then maybe मैं बोल सकता था कि we have a chance. Now that we have basically taken only 1 point out of those 2 games, I feel, and those are what I know, on paper you have just dropped technically just 5 points, right? लेकिन those are 6-pointer games, especially the City game. So I really doubt कि we will be able to overturn that. And if at all, if any team does, वो मेरे ख्याल से लिवरपूल हो सकती है. As much as people will say नहीं, लेकिन लिवरपूल अभी भी सिटी के साथ एक मैच बाकी है उनका. And और सुनने में आया कि लुइस डियाज इज इमिनेंट. तो उनका जो बैकअप है, जो स्क्वाड नहीं था, जो हम बोल रहे थे बिगिनिंग ऑफ सीजन में, आई थिंक सडन से उनका स्क्वाड एटलीस्ट अटैकिंग प्लेयर्स आर लुकिंग बेटर देन चेल्सी. लुइस डियाज वो पोर्तो वाला ना, आई गेस वही उसी का. Yes, उन्होंने स्पर्स वर चेजिंग हिम, राइट? अभी उसका न्यूज़ मैंने आज थोड़े दिन हाईजैक कर लिया. अरे स्पर्स इज मिस्टर हाईजैक क्लब. आई एम रियली सॉरी टू से स्पर्स फैंस अगर देखोगे, लेकिन लिटरली क्या करना चाहिए ना हमें, any player that Spurs are targeting, I think Chelsea और other clubs also of course उनको टारगेट करना चाहिए लास्ट मोमेंट में, because we know कि वो लोग है ना दूसरा क्लब ही प्रेफर करेंगे. नेगोशिएशंस उतने अच्छे से कर नहीं रहे, आई गेस. I know Daniel Levy है ना, Daniel Levy he doesn't give money. When the Levy breaks. ओके. मतलब यार अगर लुइस डियाज अगर साइन कर लिया, अगर किसी ने उसको खेलते हुए देखा है, मैंने तो पोर्चुगीज लीग की बात नहीं करो, चैंपियंस लीग या कोपा अमेरिका अगर किसी ने देखा होगा, देखा. ब्रिलियंट प्लेयर भाई, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर. वेरी गुड. बिल्कुल. सो आई थिंक तेरे को पूछना है तो बोल, नहीं तो मैं रैप अप करता हूँ. स्पर्स का मैं वही कहना चाहूंगा कि यार मतलब अडामा ट्रैवरे खो दिया, अब लुइस डियाज खो रहे, तो भाई कॉन्टे तो अंदर से पागल हो गया रहेगा. मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि everybody was saying that Tottenham will be the most busiest club मतलब in the last few days, but अब लग नहीं रहा कि कुछ मतलब obviously 1-2 साइनिंग मुझे अभी भी लग रहा है आ जाएंगे टॉटनहम में. शतेश सोफियान अमराबात आएगा फियोरेंटीना से. सेंटर बैक्स में तो सेंटर बैक्स से तो कोई क्वालिटी नहीं आ रही ना. और मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब
व्हाट नेक्स्ट फॉर डेले अली एंड मतलब डेले अली के लिए पूछना चाहूंगा बेसिकली, क्योंकि डाउनफॉल मतलब क्या भाई हो वो रहा है इसका? 2015 वाला Jessica, सीजन भाई। I mean, मुझे लगता है ना काफी बार मैनेजर दे मिस अ ट्रिक. लॉट ऑफ बिग मैनेजर्स, फर्गसन, मोरिनियो, इन देयर डेज वो भी करते थे कि वो आउटकास्ट कर देते प्लेयर्स को. आई वुड से नेवर आउटकास्ट अ प्लेयर. आप जब जब तक आपका विंडो खत्म नहीं हुआ, कीप देम इन द स्क्वाड, कीप ट्राई एंड कीप देम हैप्पी. आप उनको यूटिलाइज करो यार. क्लब उनको सैलरी पे कर रही है. यू आर बेसिकली हैविंग एटलीस्ट सम लेवल ऑफ प्लेयर जो सम स्किल रखता है. एज इन आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजन जो ईगो आ जाते हैं ना मैनेजर्स के. तो Conte, as much as I'm a big fan of Conte, ये एक मेजर मिस्टेक हुआ है. आई नो ही ट्राइड टू ब्रिंग Dele Alli इन, फिर भी he has not performed as much as what he would have expected. लेकिन यार I would say the sensible thing would be Dele Alli, who knows the club, like why don't you talk him over and have him perform. I know his mind वो अलग है. वो एक बहुत ही immature mind है. People are saying that he's not really focused and all that. लेकिन again that's part of manager job, नहीं क्या? तो मेरे ख्याल से as in right now, instead of going for a panic buy in the winger position especially, because now Luis Diaz is gone, Traore are going, ये दो wingers थे जो लोग टारगेट कर रहे थे, and दोनों ही wingers basically नहीं आ रहे. तो प्लस बर्गवाइन भी आयक्स जा सकता है अभी भी. there is a bid, I believe first bid turn down हुआ था. तो बर्गवाइन Ajax का is still there after him. Yeah, so I would not be surprised if basically Spurs are in dire straits. I mean, Brian Gill might go to Valencia. So why? Why don't you use Brian Gill? As much as I've seen, I've not seen much of Spurs compared to obviously Chelsea and other top clubs. लेकिन certainly Brian Gill एक रखता है in terms of वो एक flair है, रखता है that moment of magic he has. So Conte could build on that. Dele Alli could basically be that man who is super sub for every game. So why don't you use him? Even Ndombele, I know he's booed and all that by the crowd. एक तो बहुत ही टॉक्सिक है यार स्पर्स की क्राउड. लाइक अगेन नथिंग अगेंस्ट स्पर्स फैंस, बट आई फाइंड देम अ बिट टू टॉक्सिक. लाइक हाउ कैन यू एक्चुअली boo him for no matter what. So like Lukaku also got booed recently. Like these things shouldn't be there in football. 2017 में याद है 4-1 जब वॉटफोर्ड से आ रहे थे, बैकायोको को रेड मिला था, वो भी बूड हुआ था. हाँ, कम ऑन यार these are all human beings. आप कैसे कर सकते, समझ में नहीं आता. क्योंकि यार आपका प्लेयर है अभी तक, आप मतलब अपने अपने फैमिली मेंबर को थोड़ी बू करोगे. लाइक इट्स सिमिलर टू दैट ना. तो इट्स काइंड ऑफ वेरी वियर्ड. Yeah, I like it when you say I don't watch Spurs, like, but I watch Chelsea and other top clubs. I like that. Okay, let me put it. So Spurs is a big club, but it's not a top club. Let's Yeah. agree to that. No, I get that we are fine with all the jokes. I crack jokes about Real Madrid as well. We are all fine with it. Like Completely. I always say, मेरे चैनल में भी it's a fine channel for everyone to see, and because मैं सब club follow करते हैं, especially EPL में तो definitely. लेकिन वही होता है कि आप अगर सेम टाइम में मैचेस होते हैं ना, यू कैन ओनली वॉच टू मैचेस एट मैच. एक फोन पे देख लिया, एक लैपटॉप पे देख लिया और एक टीवी में देख लिया. चलो तीन मैच एट मैक्स. और ब्रॉडकास्टर्स भी आज के दिन में, अगर आपके पास मैन्यू चेल्सी और एक जगह लालीगा का मैच चल रहा है, रियल मैड्रिड बार्सिलोना, तो ऑब्वियसली स्पर्स का मैच तो नहीं दिखाएंगे ना. वो लॉजिक था उसमें. नहीं, बाकी हमको कोई ये नहीं है, हम लोग एक दूसरे का मजाक, हमको कोई वी आर ऑल फाइन विद दैट. एनीवेज, मतलब स्पर्स का मतलब हालत देख के हंसी आता है कि मतलब यार कमाल है, तुमको लेना चाहिए था प्लेयर, तुम मैनेजर क्यों लाए? वो कॉन्टे को प्लेयर्स नहीं मिले ना, वो 2 दिन में निकल लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होगा. और ये रिपोर्ट भी आ रही थी कि वो नहीं मिले उसको प्लेयर तो ही कैन लीव. yeah, he is like demanding manager है, but when he gets the players he results are there. कि यार जब उसको प्लेयर मिलता है तो उसको रिजल्ट्स भी आता है. वैसा मतलब ट्रायोरे था डन डील था स्पर्स को, कैसे बार्सा ने ले लिया मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है यार. वो बचपन का कनेक्शन, बचपन का प्यार है उसका, वो इसलिए बचपन का प्यार नहीं निकाल दिया था वापस. कितना 1/4 द सैलरी स्पर्स आई थिंक 100K के ऊपर ऑफर कर रही थी. मेरे ख्याल से 1/4 द सैलरी के लिए जा रहा है ट्रायोरे. डेफिनेटली बचपन का प्यार ब्रो, मैं बोला था और कुछ नहीं है उसको. न्यूकासल ने ब्रूनो गिमारेस ऑलमोस्ट साइन कर लिया, उसके बारे में क्या मतलब ब्रूनो गिमारेस आर्सेनल से लिंक था, फिर से हम आर्सेनल के मुंह से निवाला छीन लिया व्लाहोविच जैसा. नहीं, मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा शॉक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आर्सेनल ऐसा नहीं कि आर्सेनल ने बहुत ही वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर खोया है. यस, आर्सेनल को बहुत ही डेस्परेट जरूरत है मिडफील्डर्स के लिए, लेकिन बाय द टाइम आई थिंक शुरू हो जाएगा मैचेस वापस. आई थिंक AFCON भी खत्म हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय देन.
तो players आ are back जाएंगे for यार the लोग। next आर्सेनल one. आर्सेनल को जरूरत थी इस महीने के लिए, तो दे आर ऑलरेडी लेट तो दे हैव मिस्ड द ट्रेन ऑलरेडी। तो वो तो चलेंगे, व्लाहोविच तो भी चलेंगे अब। हाँ ऑब्वियसली हम प्रॉपर पेल दिए सब टीम से, लेकिन अभी प्रॉपर आप देखना आर्सेनल मेरे ख्याल से आएगी वापस मेरे ख्याल से फॉर्म में, तो आई कैन सर्टेनली सी आर्सेनल डूइंग वेल। हाँ ब्रूनो गुमारेस इज गुड, लेकिन आप बहुत मतलब एज फैंस एज मीडिया वी हाइप अप अ लॉट ऑफ यूरोपियन स्टार्स बहुत अर्ली। ऐसा नहीं है आगे नहीं अप्रूटेड ट्रीज लियोन में, इंग्लैंड में कभी खेला नहीं है, बहुत कम होता है। स्पेशली न्यूकासल इज अ क्लासिकल एग्जांपल। आई थिंक 2010 के 15 के बीच में न्यूकासल में लिटरली हर सीजन एटलीस्ट 2-3 प्लेयर्स आते थे फ्रांस से। आज के दिन में एक भी बता दो सिवाय मे बी सिसोको, जो एक्चुअली हैज डन वेल इन न्यूकासल फ्रॉम फ्रांस। एक ही नाम है, हतिम हतिम बेन आरफा। वो भी न्यूकासल में आई वुड नॉट ठीक, से मतलब अपने सक्सेस। दिन पे खेल लेता था ऐसा सही। खाली सिसोको था, सिसोका अच्छा, him and Wijnaldum really had a scene in the midfield of Newcastle, saving them for one season। लेकिन हाँ अपार्ट फ्रॉम फ्रांस से बेसिकली आप इतना जल्दी नहीं जज कर सकते हो, लेकिन हाँ गुड फॉर न्यूकासल, दे नीडेड बॉडीज इन द मिडल ऑफ द पार्क। जब से वो रोमन मोलिना ने वो एक्सपोज किया तब सब लोग डर रहे हैं फ्रांस के प्लेयर साइन करने से, स्पेशली मैन सिटी वगैरह। हाँ यस, यू कैन डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स डे वन से, और न्यूकासल को अभी चाहिए कि अभी रेडी है, तो आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। किसी को देहान कुलुसेव्स्की चाहिए क्या, क्योंकि टॉटनहम इज ट्राइंग टू साइन देम। अरे यार अब ये निकल तो इसका मतलब यही है कि न्यूज़ का मतलब है कि ये टॉटनहम नहीं जा रहा है, ये टॉटनहम के अलावा किसी और क्लब में जा रहा है। सो बाकी प्लेयर्स अब अगर ये भी मिस कर दिया ना टॉटनहम ने, फिर क्या बचा है फिर? तो वो एक मीम बन जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आर्सेनल सबसे ज्यादा प्लेयर्स साइन करना चाहती है पर कर नहीं पाते वो लोग, समझ ही नहीं आता क्या सीन है। उनका ओनर शायद कुछ है, अरे उनका वो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। स्टेडियम से उनका वो जब से उन्होंने वो हाईबरी छोड़ा तब से उनका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज ही है। ओके, सो एनीथिंग एल्स अभिषेक भाई, आपको कुछ नहीं, हो गया। पूछना है? हो गया। सो इट वाज अ ग्रेट एपिसोड, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और टाइम कैसे निकला हमको पता ही नहीं चला, बट या इट वाज रियली ग्रेट नोइंग योर थॉट्स। चेल्सी का ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन एंड कमिंग सीजंस एज वेल, और हम करते रहेंगे भाई। आप बोलना, आप मतलब आपका टाइम बताना, हम लोग और थोड़ा बड़ा एपिसोड या absolutely Yeah. then again like I'm open to any football। yes मतलब having watched too much football, yes definitely Chelsea के लिए affinity रहेगा, लेकिन that's the whole point about football ना। आप जब तक opponents को नहीं जानोगे you cannot really understand the game, like so I spend more time actually speaking on my channel and of course studying more other players and other teams than Chelsea। क्योंकि Chelsea तो by default हमें देखना ही और सुनने को मिलता ही है, क्योंकि यार हर एक ऐप का है ना दे रखा हो सब्सक्रिप्शन। लेकिन yes certainly nice talking to you, nice meeting Abhishek and Priyansh as well, or Dhruv of course। ओके, सो अभी आप हमको एक मतलब एक लाइक शेयर वाला थोड़ा ये कर दो, फिर आई विल क्लोज द एपिसोड। Oh yes of course yes। या नहीं आई वुड सर्टनली रिक्वेस्ट यार, मतलब अगेन नॉट जस्ट पीपल जो अभी देख रहे हैं और जो भी देखेगा इन फ्यूचर, डेफिनेटली आई वुड से कि यार आप डेफिनेटली लाइक करो सबसे पहली बात तो, लेकिन हाँ आप सोशल मीडिया में डेफिनेटली शेयर करो। यस इट इज जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन, सब्सक्रिप्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये बेल नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यस दीज गाइज जो लाइव आ रहे हैं इट्स नॉट ईजी, स्पेशली बीइंग अ न्यू चैनल। आई हैव बीन देयर, और मैं तो डेफिनेटली एंकरेज ही करूंगा, एंड सर्टनली यू गाइस आर डूइंग ग्रेट वर्क, दे नो देयर स्टफ। So just support these guys, and हम सब footballing community build कर रहे हैं, and of course on my channel anyone is welcome as well। Like I say, Almighty Blues FC, a fan channel of all to see। ओके, और डू चेक आउट अंकित भाई's ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, और ऑल्सो उनको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और एंड फ्यूचर में मिलेंगे आपके चैनल पे, कभी हमारे चैनल पे। वी विल हैव अ ग्रेट चैट अबाउट फुटबॉल। So thank you so much guys, that's it for this episode. Thank you so much. Bye bye, have a great evening. Bye bye. Bye bye. Bye, guys.